Hi, today I'm going to talk about useful chemical reactions from this textbook, and let's see what is given. The topic which has been mentioned over here, that what is the difference between a physical change and a chemical change, what is the law of conservation of mass. We find whenever a chemical reaction happens, the matter that has participated in the reaction is undergoing just transformation, means the mass does not change very much. So we are going to see what the factual balanced chemical equation, then classification of the chemical reactions. That's it. So these are the things, the difference between the physical change and the chemical change. In short, if I say physical change is that kind of change where it's temporary and it can be brought back to its original form, whereas chemical change is permanent kind of thing. So physical change which is mentioned here is temporary in nature, and it is, one can get back their the two substances mixed together. Physical change, the best example that is coming in my mind is the mixing of the sulfur powder with the iron filings. How can I separate it? The separation can be very easily done using the iron, using the magnet, the magnet bar when it is made rolled over the combination of the sulfur and the iron filing, it attracts only the iron filings, while the sulfur powder still remains in the crucible back, right? So chemical change is not that way. Chemical, if you heat that crucible which contains that sulfur and iron filing, they can react, and when FeS, the iron sulfide, will be formed, it is very difficult to separate them. So I mean to say, this is just an example that if a chemical reaction happens, you cannot separate things, whereas if physical change has happened, like two substances has come together, you can separate it using various separation techniques. The other thing, which is law of conservation of mass. Conservation of mass means none of the mass is going to get away. The mass always remains same. It states that whenever a chemical reaction happens, the reactants are going to get transformed into products, and the reactants are getting transformed into products, and the products is going to be remain of the same mass. What was the mass of the original reactants. So this is law of conservation of mass. We find different chemists have given these different laws at a different point of time during their investigation. Alright, so here we start with the topic and useful chemicals in our life: acids, bases, metals, carbonates. These are different chemicals which we are using. Can you give me one example of acids? Citric acid, which is there in all the citrus fruits like orange and lemon. They all have acids in them. On the other hand, we find base means the soda, which is used for it's edible. One can put it in food as well. So the bases are used in the soda, like which is used for in home food. And the next thing is metals. Metal, we find that we are surrounded with metals. Wire is used for wire contains which metal? Aluminium. No, it contains copper metal. So, and then carbonate says that, what is this marble? This marble is carbonate. What is this? Carbonate. And hydrogen carbonate, it says here. Bicarbonate is also another kind of this base. Soda is actually bicarbonate only. And salt is NaCl, the best example. Salt, no? If you don't have salt in your dish, it does not make it tasty, isn't it? Now here they have investigated, they have started discussing about the chemical changes and the physical changes, and as I said, that if new products are formed, then it is a chemical change, and if a new substance has not been formed, it's a physical change. Over here you can say dissolving sugar is a physical change. Can you get your sugar back if you dissolve it into a cup? Can you get your sugar back? No. Yeah, you can. You know how? Just evaporate the water. Put the glass in open sun and allow the water vapor to evaporate for some time. And then you'll find that on the surface of the glass you will be left with sugar. You understand? And on the other side you have burning wood is a chemical reaction. So how burning wood is a chemical reaction? Because as they have said over here already, that no new products will be formed. New products will be formed. Over here, when they burn the wood, what happens? Ashes would be there. Can you get your wood back? No.
You can't get your wood back, right? Yeah. And so a new But you product. can get the salt or And ashes were not existing before when the reaction had started, when the burning process was started. So a new product is formed in this process, isn't it? Yes. Correct. So now we are going to talk about the observing chemical reactions. They have said something, the safety procedure to observe evidence of a chemical reaction, and what has been taken. This reaction is talking about something. 250 cm cube beaker is there. Sodium thiosulfate is used. Potassium manganate is used. So many different citric acid, sodium hydrogen carbonate. These are the materials. And for safety, you should use goggles. Wear eye protection. What is eye protection? Goggles, right? Yeah. In chemistry lab. Have you seen that in your chemistry lab? Yeah. You have seen goggles? Goggles I've seen. You have seen. Wash up immediately any chemicals that are split on the desk, on your hands. So there is spilt. So if any chemical is falling on your hand, you should immediately wash your hand, or you should also use what do you say? You should cover your hand with all the what do you call it? The hand covers that come. Okay. The color changes. They want you to identify. Sodium thiosulfate is taken in the beaker, and there is a potassium permanganate that has been added in the beaker, and producing a solid or precipitate. Sodium carbonate has been added with magnesium sulfate. Magnesium sulfate is a salt. Sodium carbonate is there. Pour approximately. Record your observations. So they are saying, okay, you just have to identify that is the reaction happening or not. Okay, but they have not said anything. Oh, you have to do this and you have to identify if anything is happening or not. If I tell you what kind of reaction can happen, sodium carbonate is a solution and magnesium sulfate. So magnesium carbonate is going to get formed. A precipitate is going to get formed, you know. Precipitate का मतलब मालूम है क्या होता है? Precipitate means something. Here the precipitate word is there. The word precipitate means insoluble substances that don't dissolve in water. They will be formed from soluble substances only. Magnesium sulfate is a soluble solution, and sodium carbonate is also a soluble. Like it dissolves in water. But when these two substances are mixed together, it forms a precipitate. What is the meaning of precipitate? I don't know. Insoluble salt. The thing that does not dissolve. What is the meaning of soluble? Soluble means something that dissolves in water. What is insoluble? Something that does not dissolve in water. So over here they are talking about that. Then producing a gas and a change in temperature. What have they said? They have taken hydrogen carbonate, citric acid has been added. Okay, whenever carbonate is there, no, it is going to give you carbon dioxide. So a gas would be produced. Evidence of chemical reactions, you'll find some color changes happening, some fumes getting formed. Whereas in this case, so hydrogen carbonate is used, no? In this case, carbon dioxide is going to come out. You know carbonate. Why this carbonate word is there in it? Carbonate means carbon and oxygen is there. That's why it is carbo. You understand? Yeah. Whenever 8 comes, no, it means it contains oxygen in it. So that's how it is. Now gases produced in chemical reactions. What are the gases? They have given you 3 gases. And how would you investigate these 3 gases? You know hydrogen is a flammable gas. There are 3 gases that you can see in your chemistry lab. And here they have also given this image where this thing is catching fire. Acha, tell me, what are the 3 gases that they have written over here? Hydrogen gas, oxygen gas and carbon dioxide. You know oxygen and carbon dioxide is so common gas that it is also there in your biology. Means humans inhale oxygen. And what do humans exhale? Carbon dioxide. Carbon dioxide, very good. Inside So you know these 2 things you can investigate in chemistry lab. Whether the gas which is there, whatever is coming out during a chemical reaction, whether it is oxygen or whether it is carbon dioxide, you can see that very easily. You know hydrogen gas. How do you investigate it? So we find hydrogen gas is a flammable gas. What is hydrogen gas? Hydrogen gas is flammable gas. So hydrogen gas, which is a flammable gas, that can be identified by the flame test. Sorry, you take a lighted splint and you put it into the you take a lighted splint and you put it into the
into the place from which is actually removing, which is emanating the hydrogen gas. You know what's going to happen? There's a small blast that you can hear. You know what is that small blast called as? Boom. That's called as pop sound. Pop sound. What it is called as? Pop sound. So what is hydrogen gas test? It's a pop test. Yeah. What it is? It's a pop test. Why pop? Because hydrogen is a flammable gas and it can burst if it is there in greater quantity. On the other hand, is oxygen gas is there. You know what's oxygen gas do? Or how does oxygen? Oxygen supports burning. Oxygen supports life, and oxygen also supports burning. We find oxygen when it comes in contact with fire, it starts supporting it. Like if you have a light glowing splint, if it comes in contact with oxygen, it will glow more brilliantly, more better. Yeah. And carbon dioxide is what? Carbon dioxide has that special quality of turning this lime water. You know what is lime water? The chuna ka pani. What is lime water? The what? The chuna ka pani. You know what's Chuna pani in English? it's lime Polluted water. water, you mean? I mean to say Lime that water. lime water is lime is. Have you seen many people consume tobacco? They take tobacco a lot. They apply on pan, no chuna. Have you seen that? Lime Anyone? water. थूकते कभी. They don't spit. I mean, so ये record हो रहा है. क्यों वहाँ पर दे रहे हैं? ना देने का नहीं, ये क्या है, ये अच्छा रहेगा ना, तुम बार बार सुनोगे. And I'm going to just share it with you. No one else would be listening to it. Okay? अच्छा है ना? Good. So we find lime water turns milky. Lime water मतलब चूना का पानी जो रहता है ना, Lime water. वो मिल्की जैसा दिखने, वो मिल्क की तरह दिखने लगता है. Who does that? Carbon dioxide. So can you repeat after me? Lime water Carbon dioxide. turns milky. Can you see that line? Lime water turns milky. Carbon Once again. dioxide. Once again. Lime water Hmm? turns milky. Carbon Good. dioxide. So in this way I have explained you all the gases which are going to emanate in this reaction. Another thing is they're representing chemical reactions. So as I told you that reactants are going to, I think in the last class I told you about this, that this gas shown here, reactants are there and they're going to get transferred into products, correct? The reactants. So this is called as chemical reaction. What is a chemical reaction? Chemical reaction is the place where the way in which you are showing all your reactants and products together. So reactants is getting transformed into products. Chemical equation has been given to you and this thing has been presented on this side. Magnesium is combining with oxygen giving you magnesium oxide. Clear hai na? Yeah. That's it that you need to understand. And one thing is that balancing is very important. Do you see over here? Magnesium and magnesium on both the sides should be present in similar quantity. Like you can also read it in this manner, that 2 magnesium has participated with 1 oxygen molecule to form 2 molecules of MgO. 2 molecules of MgO. Mg stands for what, you know? Now we find all elements, they have a symbolic representation. You know, oxygen is represented by O. Magnesium is represented by Mg. So these are the things, as and when you proceed ahead in sciences, you'll be becoming more familiar with them. Okay? What is oxygen represented? What is the symbolic representation of oxygen? Mg. Did you just say Mg? No. Oxygen is O. O2. H2O. I mean. No, H2 is water. Yeah. And oxygen is? O. Oxygen is? O. Oxygen is? O. And magnesium is? Mg. Very good. OMG. OMG. Mg plus O. Yeah. O. Magnesium plus O2. So you know oxygen is a diatomic molecule. What it is? Diatomic. Yeah, diatomic molecule. ये देखो balancing equation यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? तो balancing equation we'll be looking at it more properly. But over here, synthesis reaction. Did I talk about types of chemical reactions in the previous class? We find there are 4 kinds of chemical reactions. पहला chemical reaction का नाम है addition reaction. It is also called a synthesis reaction. You know why? Because 2 people are coming together to form 1 product. You see this? ये देखो, हाइड्रोजन 1% हो गया, ऑक्सीजन दूसरा पर्सन हो गया, ये दोनों मिल करके तीसरा पर्सन बनाते हैं, मतलब एडिशन, ये दोनों ऐड होकर के तीसरा. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंथेसिस रिएक्शन. दिस इज द फर्स्ट टाइप. द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज व्हाट?
डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज वेरी स्पेशल. यू नो, एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होगा, उसकी वजह से दो लोग फॉर्म होंगे, मतलब ये डिकम्पोज हो गया. कौन डिकम्पोज हुआ? यहाँ पे देखो Cu का मतलब क्यूपरस होता है. Cu का मतलब क्या होता है? क्यूपरस का मतलब कॉपर. ठीक है, तो कॉपर कार्बोनेट. तुम्हें मालूम है? अच्छा, तुम ये पूछ सकते हो कि सर Cu कॉपर का स्पेलिंग CO है, तो इसको CO क्यों नहीं बोल दिया? तो कहते हैं CO किसी और को दे दिया था. CU होना चाहिए. कॉपर का मतलब Cu नहीं है ना उसमें किधर भी, तो ये कॉपर को ऐसा क्यों बोला? तो क्योंकि CO जो था ना, वो लोग ने कोबाल्ट को दे दिया था. So I mean to say, see, decomposition means one substance is going to break down into two substance. अगर दो substance में mix होते हैं तो उसका नाम होता है synthesis reaction, ये वाला. और अगर एक substance अगर break down होकर दो substance बना दे, like copper carbonate break down होकर के देखो दो substance बना दिया product में, तो इसको बोलते हैं decompose हो जाना. पता है decomposition कब होता है? जब तुम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा heat करते हो ना, तो कोई भी चीज़ ना डिकम्पोज होकर के, ये देखो अभी क्या, कॉपर कार्बोनेट का दूसरा कलर था, लेकिन वो डिकम्पोज होकर दूसरा कलर हो गया. तो हीटिंग कॉपर कार्बोनेट, अब नाउ दे आर शोइंग थिंग्स. कॉपर कार्बोनेट, इफ यू हीट, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, नो? कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू पास अवे. यू सी दिस केमिकल, दिस अरेंजमेंट. ये देखो, कॉपर कार्बोनेट को यहाँ पे हीट कर रहे हैं ना. और कॉपर कार्बोनेट जब हीट होता है तो क्या क्या इसमें से रिलीज होगा? एक बात हमेशा याद रखना, ये हीट जहाँ पे होगा ना, वहाँ पे डिकम्पोजिशन होने वाला है. और यहाँ पे कार्बोनेट जहाँ पे है ना, कार्बोनेट का ना एक बहुत बेस्ट क्वालिटी है कि वो हमेशा क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है. और कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या था? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. वो चूना वाला पानी जो था ना, वो लाइम वाटर होता है, वो मिल्की हो जाता है, मिल्क जैसा दिखने लगता है ना. फिर द थर्ड काइंड ऑफ रिएक्शन दैट वी आर गोइंग टू सी इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? वो एक जन को ना डिस्प्लेस कर देता है. जैसे अगर मैं स्ट्रांग हूँ ना तुमसे, तो अभी मैं तुमको यहाँ से वहाँ पे डिस्प्लेस कर सकता हूँ, है कि नहीं? इमेजिन करो, ठीक है, कि विनोद सर इज वेरी स्ट्रांग एंड विनोद सर इज डिस्प्लेसिंग यू फ्रॉम चेयर टू बेड. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? अ स्ट्रांग एलिमेंट, अ स्ट्रांग मेटल कैन डिस्प्लेस अ कंपैरेटिवली लेसर स्ट्रॉन्गर एलिमेंट. अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो AgNO3 है, NaCl के साथ में है. तो अभी यहाँ पे Na जो है ना स्ट्रॉन्ग है, तो देखो क्या हुआ, Na ने Ag को ना हटा दिया वहाँ से, और उसके बदले में क्या हुआ? NaNO3 बन गया. तो दोनों में से एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो यहाँ पे Na स्ट्रॉन्ग था. ठीक है, तो ऐसा ना स्ट्रेंथ की वजह से भी ना रिएक्शन होता है. ठीक है, वो आएगा, NaCl के साथ में था, लेकिन वो Na ने Cl को छोड़ दिया और Ag को भगा दिया वहाँ से. इट इज़ कॉल्ड एज डिस्प्लेसिंग. सो हु डिस्प्लेस्ड हुम? सोडियम ने. Na मतलब सोडियम होता है. तो ऐसा भी केमिकल रिएक्शन होता है कि सोडियम ने Ag को डिस्प्लेस कर. तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. किसने किसको डिस्प्लेस किया? स्ट्रॉन्ग मेटल ने लेस स्ट्रॉन्ग मेटल को डिस्प्लेस कर दिया रिएक्शन में. इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, तो फिर ये देखो यहाँ पे एक दूसरा एक्सपेरिमेंट दिया है, मेटल डिस्प्लेसमेंट. तो अब यहाँ पे दो अलग अलग सब्सटेंसेस रहेंगे. अभी Ag और Cu में ना कॉपर का ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो कॉपर उसको डिस्प्लेस कर देगा. सो ऑल ऑफ दिस थिंग यू कैन सी. अच्छा, उसके बाद एक और रिएक्शन है. व्हाट इज दिस? कंबस्शन रिएक्शन. कंबस्शन का मतलब क्या होता है मालूम है? कोई चीज़ जब जलती है ना, बर्निंग, लाइक किचन के अंदर गैस जलता होगा ना खाना पकाने के लिए. सो उसको क्या बोलते हैं? तुम जा कर के बोल सकते हो अपने मेड को, यू नो, कंबस्शन रिएक्शन हो रहा है. क्या हो रहा है? What is the meaning of combustion? Combustion means burning. Correct? So over here we have methane, which is combining with oxygen. It gives you carbon dioxide and water. Simple है? Simple है ना? Good. So इस तरीके से अच्छा हाँ, combustion कभी भी होता है ना, कभी भी अगर होता है तो वो हमेशा तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है. तो मालूम है हम लोग इनहेल करते हैं तो क्या एक्सहेल करते हैं? When we inhale oxygen, what do we exhale? ऑक्सीजन लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल. हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. तो मालूम है एक्सहेलेशन में ना वाटर वेपर भी हमारी बॉडी से रिलीज होता है. यू अंडरस्टैंड? तो ये देखो, कभी भी अगर तुम किसी चीज़ कंबस्शन करते हो ना, तो कंबस्शन ना जो हमारी बॉडी में होता है वो सेम होता है. किसके जैसा होता है मालूम है? हमारे बॉडी के अंदर जैसा रेस्पिरेशन होता है ना, ब्रीदिंग कैसा होता है? सेम ब्रीदिंग की तरह होता है कि CH4 ने ऑक्सीजन दिया, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर दिया. ये सेम रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर भी रेस्पिरेशन के लिए होता है. सो आई मीन टू से काफ़ी कनेक्टिंग है. साइंस में ऐसे ना बहुत सारी चीज़ें कनेक्टिंग तुम्हें देखने को मिलेगा. ओके, क्या ये चीज़ सिंपल है?
कंबस्शन, क्या बोलते हैं इसको? combustion. ये फोर्थ कैटेगरी हो गया रिएक्शन का। अच्छा, अभी मोर स्पेसिफिक रिएक्शंस कुछ तो यहाँ पे बताया है। लेट्स सी व्हाट आर दीज थिंग्स। ओ ओके, यहाँ पे लोग एसिड्स और बेसिस की बात कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? तुम्हें मालूम है एसिड क्या होता है? एसिड मतलब जो खट्टा होता है ना। Yeah. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड? खड्डा. खट्टा। ओके, एंड हैव यू एवर टेस्टेड इनो? Yeah. इनो के अंदर आजकल फ्लेवर डाल के देते हैं वो लोग, है ना। सो एसिड्स बेसिस वी फाइंड, एसिड्स जो होता है वो खट्टा होता है और बेसिस जो होता है ना वो बहुत ख़राब होता है। मतलब हैव यू टेस्टेड इनो, द ओरिजिनल वन विदाउट एनी फ्लेवर? हाँ. उसका टेस्ट कैसा था? अच्छा ना. ब्रिस्की। I never had Eno. you never had, अच्छा you never had acidity or any kind of indigestion? होता है पर मम्मा कोई और दवाई देती है. ओके ओके ओके, फाइन फाइन। सो यू नो व्हाट हैपेंस, ये देखो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स वी फाइंड एसिड कैन ऑल्सो रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो देखो यहाँ पे एसिड्स के बारे में बताया है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट आता है पीएच का। क्या नाम है कॉन्सेप्ट का? pH. पीएच। तुम्हें मालूम है एसिड का पीएच बहुत कम होता है, मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। बेस के पास हाइड्रोजन कम होता है, हाँ. इसके लिए ना उसका पीएच बहुत ज़्यादा होता है। मेटल जो होते हैं, मेटल ना बेस की तरह बिहेव करते हैं, कार्बोनेट भी बेस की तरह बिहेव करते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बेस की तरह बिहेव करते हैं। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? देखो एसिड कभी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होता। हाँ. क्या एसिड कभी एसिड के साथ रिएक्ट होगा? नहीं। क्या कभी बेस बेस के साथ रिएक्ट होगा? No. नहीं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल मेरा बेस है, कार्बोनेट भी एसिड के साथ रिएक्ट होता है। इसका मतलब ये क्यों रिएक्ट हुआ? क्योंकि ये बेस है। यू अंडरस्टैंड? जो भी एसिड से रिएक्ट होता है ना वो बेस होता है। तो ये देखो ये सब लोग बेसिक इन नेचर हैं। कॉमन एसिड्स, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सबका फॉर्मूला तुम्हें याद भी होना चाहिए। तुम्हें मालूम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? एसिड के सब नाम हैं, तो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, इथेनोइक एसिड। टार्टरिक एसिड इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सिट्रिक एसिड ऑल्सो यू कैन स्किप। हाँ, बट दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl। रिपीट करो एक बार, HCl. एक बार फिर से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इक्वल्स टू HCl. वेरी गुड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3। क्या होता है नाइट्रिक एसिड? HNO3. एक बार फिर से बोलो। HNO3. नाइट्रिक एसिड इक्वल्स टू HNO3। नाइट्रिक एसिड बोलो। HNO3. गुड। सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरिक H2SO4। H2SO4. 5 बार बोलो। H2SO4, 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 H2SO4. वेरी गुड, बस हो गया। सो उसके बाद आता है एथेनोइक कार्बोनिक एसिड, H2CO3। H2CO3. कार्बोनिक एसिड क्या बोलते हैं इसको? Carbon. H2CO3। एक बार फिर से बोलो। कार्बोनिक एसिड H2CO3। परफेक्ट है। अच्छा एथेनोइक एसिड बोलो। CH3COOH। यू नो विनी द पू, दिस हैज कू। इसके अंदर क्या है? कू, COOH। क्या है इसके अंदर? COOH। COH. OOH। COOH. COOH। COOH। COOH. या 2 बार O है। COOH। हाँ. COOH। C. ये एथेनोइक एसिड है, CH3COOH। ओके, फर्स्ट टाइम इतना ये डबल टाइम ओ जनरली और किसी सब्सटेंस में नहीं आता, लेकिन एथेनॉल। तो ये एसिड्स का नाम पता होना चाहिए, बहुत बेसिक बात है और बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में ना एसिड्स का नाम पता होना चाहिए। चलो ठीक है, अभी रिएक्टिंग मेटल्स विद एसिड्स। तो मैंने क्या बोला, मेटल्स ये सब ना बेस होते हैं, इसके लोग एसिड से रिएक्ट होते हैं। ये देखो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है, मैग्नीशियम विच इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द वाइट कलर इज ड्यू टू द मेनी बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तुम्हें मालूम है गैस का भी अगर फॉर्म होता है तो फिजिंग क्या होता है? फिजिंग होता है। ठीक है, तो मेटल्स रिएक्टिंग विद वाटर। अच्छा, मेटल अगर रिएक्ट हुआ वाटर के साथ तो क्या होगा? हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। यू नो बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं ना, आई विल शो यू सम रिएक्शन। देखो मेटल्स रिएक्टिंग विद वाटर, अगर मेटल रिएक्ट हुआ वाटर के साथ तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है, बेस बन जाता है। ये देखो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दिखाया भी है कि KH2O के साथ रिएक्ट होता है, जिसके वजह से KOH और हाइड्रोजन बन जाता है ना। सो मैंने क्या कहा कि मेटल्स जो बेसिक होते हैं वो बेसिक होते हैं। ये देखो इसके साथ रिएक्ट हुआ और ये देखो मेटल का हाइड्रोक्साइड बन गया। हाइड्रोक्साइड ना बेस होता है,
हाइड्रोजन एसिड होता है और हाइड्रोक्साइड बेस होता है. यू नो H2O का ब्रेकडाउन कैसे होता है? वाटर. H2O मतलब वाटर. H2O का मतलब वाटर. वाटर. तुम्हें मालूम है वाटर दो कंपोनेंट से बना होता है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्साइड. तो जो हाइड्रोजन होता है वो एसिड में चला जाता है और जो हाइड्रोक्साइड होता है दैट गोज एक्चुअली इन द बेस. ओवर हियर मैंने क्या बोला, मेटल्स जो होते हैं ना वो बेसिक होते हैं, इसके लिए वो लोग एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं. जब तुमने उसको वाटर में डाला ना मेटल को, तो मेटल एक्चुअल बेसिक बन के दिखा. ये देखो KOH बन गया. और हाइड्रोजन को मैंने पहले ही तुम्हें कहा था, हाइड्रोजन इज अ Is a gas. is a gas. Definitely it's a gas, but it is a flammable gas. It catches fire, isn't it? Yeah. है ना. तुमने कभी किसी मूवी में देखा है कि गाड़ी ऐसे जाती है, डैश हो जाती है, फिर गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है? हाँ. सुना है तुमने ये? हाँ, गाड़ी में ब्लास्ट क्यों होता है? Because it's the law of a movie. नो इट्स नॉट द लॉ ऑफ अ मूवी. वही उसमें ना director को उसमें चाहिए. ऐसा हुआ कुछ रहेगा जहाँ पे ना हाइड्रोजन गैस जो है ना वो निकल रहा होगा और फ्रिक्शन की वजह से हाइड्रोजन गैस अगर है उसने इट कॉट फायर और उसकी वजह से इमीडिएट ब्लास्ट हुआ. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इज हाईली फ्लेमेबल. अच्छा, एसिड्स बेस कभी भी अगर रिएक्ट होते हैं तो इनकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन होता है. सारे के सारे एंटासिड्स जो होते हैं ना वो लोग, एसिडिटी होती है ना पेट में, तो एसिडिटी को मिटाने के लिए किसको कंज्यूम करना पड़ेगा? बेसिसिटी को. तो कहते हैं एसिडिटी को हटाना है तो बेस ड्रिंक करो. तो लोग एंटासिड्स मिलता है मार्केट में. क्या मिलता है? एंटासिड. मतलब जो एसिड का उल्टा है. एसिड का उल्टा कौन है? एंटासिड. और एंटासिड बेस है. तो एसिड और बेस कभी भी अगर मिलते हैं ना तो उससे बनता है, क्या बनता है? एसिड और बेस अगर साथ में मिलते हैं तो दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. दे गेट न्यूट्रलाइज्ड. व्हाट हैपेंस टू देम? दे गेट न्यूट्रलाइज्ड. तो न्यूट्रलाइजेशन होता है. और फिर ये देखो यहाँ पे मैंने एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में लोग ने बताया है और ये सिंपल है लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस है. इसमें बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें देखना है कि इसमें कलर चेंज से ना ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हेन रिएक्शन खत्म कभी हो रहा है. When is this reaction getting over? It is called as universal indicator. I will be talking about it more later. ठीक है, अभी के लिए हम लोग ने जितनी बातें बोली है ना, ये देखो एसिड एंड कार्बोनेट रिएक्शन, तो ये कार्बोनेट भी क्या होता है? बेसिक होता है. और हाँ, लेकिन बेस्ट पॉइंट दैट कार्बोनेट जहाँ भी रहेगा ना कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलता है उसमें से. कार्बोनेट किधर भी. तुम्हें मालूम है ये जो मार्बल्स होते हैं ना, मार्बल, ये जो मार्बल दिख रहा है तुम्हें, दैट इज एक्चुअली हैविंग कार्बोनेट इन इट. क्या है उसके अंदर? कार्बोनेट. तो अगर इसको किसी ने फायर दिया ना तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा. यू नो दैट. इसमें से क्या निकलेगा? कार्बोनेट. तो ये देखो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है ना, तो ये लोग ने दिया कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक. तो ये देखो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है. कार्बोनेट कभी भी रिएक्ट होता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकालता है. तो ये पॉइंट जरूर याद रखो. तो इस तरीके से मैंने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया हाफ एन आवर के अंदर में, है ना. तो ये तुम्हें कभी भी रिकैप लेना रहेगा ना तो ये वीडियो तुम्हारी बहुत मदद कर